टीम में भी था। नाउ redress of the issues like बलवंत राय मेहता कमिटी in 57 analyzing the tardy pace of the development, जिला परिषद at the district level, पंचायत as a समिति block level and ग्राम पंचायत at the village level. So there should be a genuine transfer of the power, adequate resources should be transferred and all development scheme launch for this. So PRI में क्या होता है, एक तो 1959 फिर स्टेगनेशन का टाइम आया, डिक्लाइन हुआ एंड द पीरियड ऑफ रिसर्जेंस, द पीरियड ऑफ असेंडरी. जवाहरलाल नेहरू द पंचायती राज was launched in 1959 and Andhra Pradesh followed thereafter. Majority of the PRI, this area was the golden era those days promoting the PRI. This was the Nehru and the Pan India phenomenon. That was the Indian scholar was the Sharma referred to the 1965. PRI was neither a constitution nor a statutory. It is the byproduct of the executive initiative in 1959. Irrespective of the fact PRI was not constitutional body, it became pan-India phenomena. One-party dominant system. Jawaharlal Nehru was the unquestionable leader of the Congress party. ठीक है. फिर by 1960 numerous number of the studies of the planning commission, NGOs डेवलपमेंट के हुए. अवार्ड प्रोग्राम आया 1962 में. Most of the study conducted 1960 and quality of the development in this 1960 and period of the stagnation, that was 1969. Strong political opposition let the panchayat make million of the milestone in PRI were becoming a nursery for the political institution. Stiff opposition from the bureaucracy. So bureaucracy, it was the apex of the British India. However, there was an independence, but there was an inherent dislike of the bureaucrats operate under the overall political institution. And now there was a period of 1977. Thereafter, many roles of panchayat were the bureaucratized and bureaucracy set up look the matter of the local government. For instance, the agriculture development program that was in 1960, green revolution एंड स्मॉल फार्मर के लिए डेवलपमेंट 1969 में, ट्राइबल के लिए जो था 1962 में, ड्रोन प्रोन एरिया जो थे 1970 में एंड द डिजर्ट प्रोन एरिया 1977 में. ठीक है. नाउ देयर वाज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिजल्टिंग इनटू द PRI बट क्वेश्चन डिसमिस पीरियड ऑफ दिस एंड इन रिसोर्सेज ऑफ PRI. जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ मोरारजी देसाई won the general election. जनता गवर्नमेंट अशोक मेहता जो था itself look into the matters of PRI. This marked the point the revival of PRI. Ashok Mehta was the similar of the Balwant Rai Mehta and offered the Mehta committee with the referent from the Balwant Rai Mehta, and some of the accepted the Ashok Mehta committee and the recognizing the basis for the recommendation of the West Bengal. The Janta government did not remain the power long. The Congress under this India 1980 and the Congress government did not pay much attention to PRI. This was continued in 85. Planning Commission of India constituted the committee GVK Rao committee and to look after the matter of rural development, poverty alleviation. Rural Rao committee जो थी, this committee was also very critical about the bureaucrats hijacking the role of PRI. In this LM Singhvi committee जो थी 1986 में, it was the first recommendation the local self government should be constitutionally recognized. तो ये LM Singhvi committee ने कहा था constitutionally recognition करो, protection and the preserve the inclusion of the new chapters. and the 1980 में consultation committees आई under the PK Thungan committee and that was recommendation of the Singhvi committee. तो थुंगन committee की leadership में consultation हुआ. In this backdrop now there was a 64 amendment आया था 89 में, इंट्रोडक्शन हुआ था. बिल वॉज अपोज स्ट्रांगली बट इट डिड नॉट रिकॉग्नाइजिंग द रोल ऑफ द स्टेट एज इट्स प्रोवाइडेड द डायरेक्ट लिंकेज एंड PRI. इट इम्पोज द यूनिफॉर्म पैटर्न्स एंड नाउ देयर वॉज ए सब्सिक्वेंटली नरसिंह राव कांग्रेस गवर्नमेंट 73rd अमेंडमेंट बिल आया एंड दिस बिल वॉज राज्यसभा में लाया गया. ठीक है. पहले उसके बाद में द टोटल नंबर ऑफ द स्टेट असेंबली जो है 24 अप्रैल 93 में every year is celebrated the Panchayati Raj Day. 73rd amendment provided the constitutional status to the Panchayati Raj enabling and now the state taking the advantage of the enabling act. now इसके बाद में प्रोविज़न क्या था कि 3 टायर्ड सिस्टम होना चाहिए. 20 लाख की पॉपुलेशन जहाँ भी होगी. रिजर्वेशन दिया जाएगा SC ST को एंड 1/3 फॉर द वुमेन. रिजर्वेशन फॉर वुमेन 1/3 दिया ही गया है. ठीक है. एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा हर स्टेट में. स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा हर स्टेट में. डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे. बूस्ट करेंगे किसको? ग्रास रूट डेमोक्रेसी को. क्रिएशन ऑफ ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत होंगे जो कि एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वहाँ के, वो आएंगे. चेयरमैन ऑफ द ग्राम पंचायत
सरपंच होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा, चेयरपर्सन होगा, अरेंजमेंट ऑफ द बट मैंडेटरी इलेक्शंस होंगे यहाँ पे। तो ये सारी बातें कही गई। इनेबलिंग द आइटम्स ऑफ 29 आइटम्स को हमने 11 शेड्यूल के अंदर डाल दिया।